Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें जैकोबियन विषय रे पढिबा सो फॉर दिस लेट अस टेक two function u and v of two independent variables x and y. Then the determinant del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y. This determinant will be called your Jacobian of uv with respect to xy. So it is represented as Jacobian of uv with respect to xy, which is equal to del uv by del xy, right? So here the independent variables are 2. Now if we take 3 independent variables and accordingly 3 function, okay, u v w of x y z, then we will have a 3 cross 3 determinant. Okay, the upper one was 2 cross 2, this is the 3 cross 3 determinant, and the Jacobian is j u v w of xyz, which is del u v w of del xyz, and it is equal to this much. Okay, so the extra term is your del u by del z, del v by del z, then your del w by del z, along with this del w by del x, del w by del y, right? Now similarly we can also have 4 or more variables. Okay, so a Jacobian having 4 or more variables can also be defined. Let us discuss some of the properties of these Jacobians. The property number 1, it is saying that if j equal to del uv by del xy and j star is equal to just the opposite, that is your reciprocal del xy by del uv, then if we multiply j and j star, then its value will be equal to 1. Okay, now let us prove it. So देखो आमे एठी कोन करिबा, u को एज ए फंक्शन ऑफ xy नै जिबा, v को एज ए फंक्शन ऑफ xy नै गला. Now expressing this x and y in terms of two independent variables phi and psi by solving u equal to fxy and v equal to gxy, then we will get x equal to phi of uv, that is x is a function of uv and also y is a function of uv. Okay, this is psi, right? Then if we take the partial derivative, then del u by del u, obviously its value is equal to 1. We can write it as del u by del x into del x by del u plus del u by del y into del y by del u. In a similar way, if we calculate del v by del u, then its value will be 0. Accordingly, this is the expansion, right? Similarly, del u by del v is also equal to 0. This is the expansion. And finally, del v by del v is equal to 1 with this expansion, right? अच्छा, एतिकी वैल्यू हमें पार्शियल डेरिवेटिव रो पाई गला. Now let us find the value of j star, okay, and prove it to be equal to 1. So j ro value it is 2 cross 2, so this is the value of j and this is the value of j star, right? As given in the question, j होची देखो क्वेश्चन दे दीची, j होची एई फंक्शन टा, j star होची एई फंक्शन, से हिसाब रे हमें एई डिटरमिनेंट बाहर करछु, right? Now you know that when determinants are multiplied, that is we take the product of suppose two determinants, then आमे एठी फर्स्ट डिटरमिनेंट रो फर्स्ट रो को नेबा, ता सहित आमे सेकंड डिटरमिनेंट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करिबा, so that we will get the first element of the product determinant, right? Thereafter first row into second column, then we get the second element of the product determinant.
तापरे second row into first column, so that the third element, and second row into the second column, so that we are getting the fourth element. Okay, now here it is doing another way. एठी सेकेंड जो डिटरमिनेंट अच्छी तार रोज आउ कॉलम को इंटरचेंज कर देछि तापरे याको मल्टीप्लाई करिछि रो वाइज, बट आई एडवाइज यू टू फॉलो द row into column technique. Okay, this you have also read in your +2, right? How to determine the product of the determinants. Okay, acha se ja bhi ho, this will be the product of your j and j star. So you can see from this determinant, these are the values which we have already obtained from del u by del u, del u by del v, then del v by del u, and del v by del v. Okay, so accordingly it 1001 ହେଇଯିବ, so its value will be equal to 1. Okay, and hence it is proved. Now the second property, এটি কହୁଛି if u and v are functions of rs and rs are function of your xy, then del uv upon del xy should be equal to the product del uv upon del rs and del rs upon del xy. That is, in terms of Jacobian, we have j uv upon xy should be equal to j uv upon rs and j rs upon xy. So let us prove it from the RHS. Okay, this is the RHS. Now we write it in terms of determinant. Thereafter we take the product. Okay, so determinant ro product kemti bahar kara hue already mu bataili. So after taking the product, this will be the value of the final determinant. Now you can see this first element. Okay, this first element is nothing but del u by del x, because एठी देखो del r cancel ହେଇଯାଉଛି, del s cancel ହେଇଯାଉଛି, so ଆମେ ପାଇଲା del u by del x. Similarly the rest of the elements will also be reduced to this format. Okay, so that finally we are getting del uv upon del xy, right? So this is proved. Okay, from RHS we are getting the LHS, that is the Jacobian of uv upon xy is equal to the product of Jacobian uv upon rs and the Jacobian rs upon xy. Okay, and it is the chain rule for your Jacobians. Okay, so ये है second property of the Jacobian. Now let us see the third property. So एठी कहूची तीनिटा function नबा आमे u v w. Okay, these are three functions of three independent variable x, y and z which are not independent. Okay, then the Jacobian del u v w upon del x y z will be equal to 0. Okay, if they are not independent, means they are dependent, right? Now let us prove it. See, as u v w are not independent variables, so the function of u v w should be equal to 0. Let us now differentiate this with respect to x, y and z, right? Remember, f is a function of u v w. We are differentiating with respect to x, y and z, so that we are getting del f by del u, because it is a function of u v w. So accordingly del f by w, del f by del v, then del f by del u, right? Tapare del u by del x, del v by del x, del w by del x, right? And its value should be equal to 0, because f is equal to 0, right? Now with respect to y and z we differentiate it. Let it be equation 1, 2 and 3. Now from these three equations we can eliminate the terms having del f by del u, del f by del v and del f by del w, right? So that we can get the determinant, that is del u by del x, del v by del x, del w by del x, and similarly the second and the third row, which should be equal to 0. This is nothing but your Jacobian, that is del u v w upon del x y z, and its value is 0. Hence the third property is also proved. Okay, now let us see the Jacobian of implicit function. Okay, तो implicit function माने suppose u v होची implicit function of xy, then f1 of u v xy should be equal to 0 और f2 of u v xy should be equal to 0.
ताले एठी हमको प्रूव करबा को पड़िबो जे del uv upon del xy is equal to -1 square into del f1 f2 by del xy divided by del f1 f2 by del uv. Okay, so for this let us differentiate ए जो f1 और f2 रो दुईटा जो फंक्शन देइछि याकू हमें डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y. ओके, सो एठी हमें डिफरेंशिएट कर देला फर्स्ट del f1 by del x हला तापरे एठी जो फंक्शन जो हिसाब रे देइछि से हिसाब रे हमें लिखिबा del f1 by del u into del u by del x then del f1 by del v into del v by del x, राइट. किंतु del y by del x हबोनी काहे कि बिकॉज del y by del x जो टर्मटा आसबो दिस शुड बी इक्वल टू 0 सेति पई एथि लेखाइनी, राइट. तापरे सिमिलरली हमें f1 को डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू y, thereafter f2 को डिफरेंशिएट करिबा विथ रेस्पेक्ट टू x and y and all these values will be equal to 0, right. सो हमें कोन करिबा एबे देखो क्वेश्चन एठी जो अछि एई टर्मटा, ओके, आउ एई टर्मटा डिवाइड ही कि अछि RHS रे, सो वी टेक दिस टर्म टू LHS, right, so that the LHS term into this term at the denominator of the RHS, this should be equal to -1 square into del f1 f2 by del xy. Okay, this we have to prove. So accordingly let us calculate for this product. Okay, this is the product, then we write it in form of determinant or product bahar kariba. This will be reduced after using the above 4 equation, right, equation 3 4 5 6 a through a determinant reduce kari jibo like this. Okay, so it is minus del f1 by del x minus del f1 by del y then minus del f2 by del x and minus del f2 by del y. So we take this minus common from first row and second row, so that this will be -1 square and the determinant will be your del f1 f2 upon del xy. Hence it is proved. We can write it as given. Okay, this is the argument which has been proved. Okay, and here note that if u, v, w are the implicit functions of xyz, then एबे जदि आमे तीनटा फंक्शन नेबा, राइट, आ तीनटा वेरिएबल नेबा. ओके, दिस वन वाज having two functions and two variables. Now we take three functions and three variables. Then del ubw upon del xyz should be equal to -1 the whole cube. Accordingly we take del f1 f2 f3 upon del xyz divided by del f1 f2 f3 upon del ubw, right. Now the next example, let us have an example. Now use the Jacobian to prove the function which are given u equal to x minus y by x plus y and v equal to xy by x plus y whole square. They are not independent, that means they are depending upon each other, and find the relation between them. So here we do the property of Jacobian. Okay, according to which del uv upon del xy जदि यार वैल्यूटा 0 हैला ताले आमे कहिबा जे uv are not independent, that is they are dependent. Okay, so we have to calculate this value. Okay, this is the determinant and we use the value of u and v. Okay, simple differentiation. Okay, so after differentiating and calculating this determinant, we are getting the value like this and this should be equal to 0. Okay, because एठी देखो एटा कैंसिल हो जिवो 2y x square एठी अछि, then एटा कैंसिल गला यहाँ सहित सिमिलरली 2x y square एटा एठी कैंसिल हो गला, सो यार वैल्यू 0 आसिला. Okay, that is u and v are not independent. Okay, also u square रो वैल्यू जो हमको देइछि सेथरा में एति के पाइला, so 1 minus u square रो वैल्यू this much. Now 1 minus u square जो हमें पाउछु, this is nothing but 4xy by x plus y whole square, which is your 4v. So this is the functional relationship between u and v, right. Tapore next example, check whether the function, again two functions are given u and v in terms of x and y, they are functionally dependent. Okay, so functionally dependent जदि कहला माने हमको एई वैल्यूटा को बाहर करिया को पड़िबो, यार वैल्यूटा 0 होउची ना नाही हमको चेक करिया को पड़िबो.
okay, and if yes, find the relation between u and v. Okay, so similar way re I think eta tome easily kari paribo. Okay, note that konosi jare if you find any printing mistake or any error, you can tell that in the comment box, right? So देखो एठी सेही way रे यार value टा बाहर कला, and at the end यार again 0 आउची del u v by del xy, so they are functionally dependent and relationship ए हिसाब रे से देखो बाहर करिछि। तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिबा, एठी पोलर कोऑर्डिनेट्स देइछि। ओके, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा बाहर करबा को कहिछि del xy upon del r थीटा, यार वैल्यूटा r हेबो बोली कि प्रूव करो कहूछि। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल, you have to find del x by del r, del x by del theta, del y by del r, del y by del theta. Then you have to put this value in this determinant, and after solving you will get the value to be equal to r. Okay, it is very simple problem. तापरे एग्जांपल नंबर 2 रे एठी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रे देला अगेन x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, z is equal to z. Okay, so the Jacobian, that is del xyz by del r theta z. Okay, এটা ମୁଁ तुमको टास्क दउची, तुम निजे एटा कैलकुलेट करी चेक करिवो एटा असुची ना नाही। ओके, इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू cos थीटा देन माइनस r sin थीटा देन 0, दिस इज द फर्स्ट रो। सेकंड रो रे आसिला sin थीटा r cos थीटा 0, और थर्ड रो रे 0 0 1, so that after calculating this determinant the value of j should be equal to again r, right? So ये वाला cylindrical coordinates. Now in terms of your spherical coordinates, spherical polar coordinates, x is equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta. Okay, accordingly आमे partial derivative यारो बाहर कर देला ए जो तीनटा जाको कोऑर्डिनेट हिसाब रे, राइट? तापरे यारो डिटरमिनेंट आमे बाहर करिबा, and we calculate for this value. Okay, so देखो एठी यारो वैल्यूटा r स्क्वायर sin थीटा आछि j रो वैल्यू इन spherical polar coordinates, right? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, एठी x रो वैल्यू r cos थीटा, y r sin थीटा, देन प्रूव दैट del r थीटा by del xy into del xy by del r theta, এটা जो चेन रूल हिसाब रे this should be equal to 1. okay, it is also very easy. okay, so एटा मी तुमको मु टास्क हिसाब रे दउची, simply calculate करो, then put this values in the respective determinant and make your product. okay, determinant दुईटा जो बाहरिबो गोटे रो वैल्यू 1 by r बाहरिबो आ गोटे रो वैल्यू r बाहरिबो, so that the product will be equal to 1. okay, next problem, if u equal to yz by x, v equal to zx by y, and w equal to xy by z, then prove that del uvw by del xyz should be equal to 4. so first we have to do this function, that is your del uvw by del xyz, याकू आमे यारो रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट हिसाब रे लिखि देला। एबे देखो uvw रो वैल्यू दे देछि, आमे यारो पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करि परिबा accordingly with respect to x, y and z. okay, now after getting the partial derivative values we just put it and solve this determinant. okay, determinant solve करिवो, चेक करिवो यारो वैल्यू 4 आसीबा कथा। okay, एठी देखो कॉमन आसी जाइछि x square y square z square तळे भी अछि, so cancel हे गला, and this determinant should be equal to 4, right? तापरे एग्जांपल नंबर 6, एठी देखो देइछि x रो वैल्यू आ y रो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u and v, अप्रूव करबा को कहिछि j स्टार इज इक्वल टू 1. ओके, यार वैल्यू 1 हुए आमे स्टार्टिंग रे देखुथिला, सो आमे कोन करिबा अगेन j आउ j स्टार रो वैल्यू टाकू बाहर करिबा सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट, तापरे प्रोडक्ट करिबा। किंतु एठी गुटे देखो प्रॉब्लम हैला, x आउ y रो जो वैल्यू देला टाकू इन टर्म्स ऑफ u v देइछि, हमकु दरकार कोन एठी जो पार्शियल डेरिवेटिव del u by del x, del u by del y, del v by del x, del v by del y, सो हमकु u आउ v रो वैल्यू এই जो रिलेशन रु बाहर करिया को पड़िबो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। सो देखो एक्स रो वैल्यू एठी u को मल्टीप्लाई कर देला, तापरे याकू सॉल्व करी कि u रो वैल्यू बाहर कला x प्लस y। सिमिलरली आमे v रो वैल्यू मध्य बाहर करि परिबा, v रो वैल्यू देखो एठी आमे लिखि परिबा ए रिलेशन रु y by u रो वैल्यू टाकू पुट कर दबा, सो y by x plus y। नाउ वी कैन इजीली
calculate for the partial derivatives. Okay, so j star रो value आमे एठी पाई गला यार वैल्यूटा u इनवर्स आउ j रो वैल्यू जदि आमे बाहर करिबा यार वैल्यूटा आसीबा कथा u. ओके देखो एठी फाइनली यार वैल्यूटा u आछी राइट. सो j into j star will be equal to 1 and hence proved. Okay, next example number 7 एठी u रो वैल्यू देइछि x plus y by 1 minus xy. then याकू ये कौन कर tan inverse x plus tan inverse y एटा दूसरी आई थिंक v रो वैल्यू एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी. ओके I will edit that later. So find the value of del uv by del xy. Okay, so simply याकू आमे partial derivative करबा को पड़िबो respectively. Okay, del u by del x by del y then del v by del x by del y. Okay, partial derivative बाहर करला परे आमे याकू पुट करिबा and calculate for the determinant so that its value should be equal to 0. Right, then example number 8 एठी del uv by del r theta यार वैल्यू बाहर करबा को कहूची. if u is equal to 2xy, v is equal to x square minus y square and x और y रो वैल्यू in terms of your polar coordinates एठी दे दीची r cos theta and r sin theta. राइट, सो जो u equal to 2xy अच्छी एठू आमे पाई जिबा यार रेस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव्स. ओके, सिमिलरली आमे v रू भी पार्शियल डेरिवेटिव्स पाई गला. तापरे आमे x आ y रो पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करबा विथ रेस्पेक्ट टू r and theta. ओके, सो आवर टास्क इज to split this term. Okay, del uv by del r theta, this should be equal to del uv by del xy into del xy by del r theta. Right, so এই হিসাবে আমি স্প্লিট করি পারিবা বিকজ এটি u v দেইছি in terms of xy and xy দেইছি in terms of r theta. Okay, so দেখো এটি আমি ফার্স্ট ক্যালকুলেট কলা del xy upon del r theta यार वैल्यू आसिला r. तापरे आमे बाहर करिबा del uv upon del xy यार वैल्यू आसीगला -4 r square. So simply we have to take the product so that यार वैल्यू आसीगला -4 r cube. Okay, अच्छा एबे देखिबा how we can change the variables in integrals, खास करी multiple integrals रे. Okay, sometimes by changing the variables the evaluation of double and triple integrals become quite easy. So first आमे double integral देखिबा. suppose x और y होची दुटा आमर variable आमे याकू change करिबा to new variables u and v by equation x equal to phi of uv, that is a function of uv, and similarly y is a function of which is psi of uv. Okay, and here phi uv और psi uv एटा जो आछी these are continuous function. Right, then double integration, suppose it is integrated over a region R. Okay, double integration over a function of xy with respect to dx and dy याकू आमे लिखि परिबा double integration with respect to r dash एठी आसीगला f of phi uv then psi uv then your Jacobian then du dv. Okay, here j is the Jacobian of the variables of transformation. Right, and its value is j equal to del xy by del uv which is in form of determinant like this. Okay, so याकू आमे ए हिसाब रे डबल इंटीग्रल को लिखिला. तापरे ट्रिपल इंटीग्रल मध्ये आमे सिमिलरली लिखि परिबा. सपोज x y z हेगला फंक्शन ऑफ थ्री न्यू वेरिएबल्स. ओके, u v w. राइट, u v w हिसाब रे देन the triple integral, that is your volume integral of a function f which is a function of x y z, this should be x. Okay, it printing mistake अछि. So यार value आमे लिखिला triple integral with respect to v dash or v prime then f which is a function of x y and z, thereafter the Jacobian then du dv dw. So same format रे जेमति आमे double integral लिखिला extra variable add हेछि w एठी. राइट, आउ जो फंक्शन अच्छी एठी z मध्य. राइट, आउ जैकोबियन तो जानिछ एटा तमरो तीनटा जदी वेरिएबल रहउची ताले अकॉर्डिंगली वी विल गेट अ 3x3 determinant. Okay, so let us use these in solving some of the problems. So एठी कहउची फर्स्ट प्रॉब्लम रे using this transformation एठी u रो वैल्यू दे देला then v रो वैल्यू दे देला
find the integral double integral बाहर करिया कहूची x plus y dx dy. Okay, एठी r होची a surface of parallelogram that is given by x plus y equal to 1, then x plus y equal to 3, then 2x minus y equal to 0 and 2x minus y equal to 4. So indirectly the boundary conditions are given like this. Here x plus y is equal to u. Okay, so u is varying from 1 to 3 and 2x minus y is equal to your v. Okay, so it is varying from 0 to 4, right? Now u ର value जोटा x plus y ଆଉ v equal to 2x minus y, so that we are getting u plus v equal to 3x and x equal to u plus v by 3. Similarly y is equal to 2u minus v by 3. Okay, and this is the variation which I have told. So आमर काम है एबे ये जो x और y रो वैल्यू पाइला यार पार्शियल डेरिवेटिव बाहर करिबा विथ रेस्पेक्ट टू u एंड v. ओके, आ मने रख ये जो जैकोबियन आमे एठी नौचु ऊपर जो ट्रिपल इंटीग्रल रे देखुतिला द मैग्नीट्यूड एक्चुअली हैज बीन टेकन. ओके, सो जदी जैकोबियन रो वैल्यू नेगेटिव आसिला देन वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, राइट? सिमिलरली इन केस ऑफ आल्सो योर डबल इंटीग्रल. सो देखो एबे पार्शियल डेरिवेटिव आमे ये जो x और y रो याको आमे बाहर करिकी ये डिटरमिनेंट रे पुट करि देबा so that we can calculate for the value of Jacobian. Now after finding the value of Jacobian we calculate for the double integral. Okay, and now we transform this. Okay, x plus y रो value टा आमे पाउथिला केते u पाउथिला. Okay, Jacobian पाइला minus 1 by 3, we take the magnitude so that it will be 1 by 3. Okay, this is the variation or the limit. So याकू simply आमे easily integrate करि परिबा. After integration we will get 16 by 3 as the result, right? Then example number 2, एठी कहूची find the value of this double integral 0 to infinity exponential minus x square plus y square dx dy. So आमे एठी कोन करिबा, we take the help of your polar coordinates r and theta. Okay, here the variation of x is from 0 to infinity and similarly for the value of y. Okay, so एठी आमे r को नै जिबा from 0 to infinity the variation. Okay, from this to infinity onwards. आउ theta को accordingly नबा आमे 0 to pi by 2. Okay, because एटा होची maximum और minimum limit theta आउ r रो, right? जेमती हमरो x और y रो maximum minimum limit देछि, right? So x equal to r cos theta आउ y equal to r sin theta हुए polar coordinates रे तमे जानि छ. ताले x square plus y square जो एठी अछि ब्रैकेट रे यार वैल्यूटा हेबो r square. आउ आमे जदि जैकोबियन बाहर करिबा यार वैल्यूटा r आस्थिला आमे ऑलरेडी याकू गोटे प्रॉब्लम रे डिस्कशन करि सारछु. ओके, ताले एबे डबल इंटीग्रल आमे इजीली बाहर करि परिबा. देखो we transform this e to the power minus r square हे गला, then dx dy टा हे गला r dr d theta. Limit change हे गला accordingly. Now we can calculate the double integral, its value should be equal to pi by 4. And here note that जदि I रो value ए जो आमे इंटीग्रल देखुतिला e to the power minus x square dx and I dash is the integral e to the power minus y square dy. ताले I into I dash यार value pi by 4 हैला और I square equal to pi by 4 और I equal to square root of pi by 2, right? Next example number 3 को देखो, एटा भी similar problem गोटे. ओके, सेही फॉर्मेट रे देइछि किंतु लिमिट टिके अलगा देला. एठी x square plus y square is greater than or equal to 4 and less than or equal to 25 देइछि आउ y equal to x देइछि. So polar coordinates रो हेल्प नबा x equal to r cos theta, y equal to r sin theta आउ ए जो y equal to x अछि. So theta रो तो हमें जानिला इनिशियल जो मिनिमम लिमिट एटा 0 पड़िबो एठी आ y equal to x हे गले हमें एठू ए जो दुई वैल्यू रो पाइबा केते ना cos theta equal to sin theta, so that एटा को केस रे आसीबो जते बेले cos 45 हबो, this would be equal to sin 45 which is 1 by root 2. So theta रो maximum value टा हबो pi by 4. Also x square plus y square रो value आसी गला r square. Okay, so Jacobian easily हमें बाहर कर देला. Again it should be equal to r. आ एठी x square plus y square देखो एठी गोटे होची 4 गोटे हला 25. That means r square is 4 and your 25, that is r varying from 2 to 5, right? So एटा हमें लिमिट पाई गला हमरो r आउ थीटा रो. तापरे एठी accordingly हमें
या को ट्रांसफॉर्म करि परिबा एंड वी कैन कैलकुलेट दिस डबल इंटीग्रल वेरी इजीली यार फाइनल वैल्यू चेक करिवो आसीबो पाई बाय 16 इंटू e टू द पावर 50 माइनस e टू द पावर 8 ओके नेक्स्ट एग्जांपल 4 रे एठी गोटे डबल इंटीग्रल बाहर करियो कोइची of x square plus y square okay and here R is the region with a square having vertices 0 0 1 1 2 0 and 1 minus 1 right so हमें कौन करिबा या को ट्रांसफॉर्म करिबा ई इंटीग्रल को बाय पुटिंग x plus y equal to u and x minus y equal to v right so that या को दुईटा को जदि हमें ऐड कर देबा देन एटी प्लस वाई माइनस वाई कैनसल होगा सो दैट 2x इक्वल टू यू प्लस भी और x इक्वल टू हाफ ऑफ यू प्लस भी सिमिलरली जदि या माइनस करवा ताहले हमें पाइबा 2y इक्वल टू यू माइनस भी और y इक्वल टू हाफ ऑफ यू माइनस भी ओके सो x और y रो वैल्यू हमें पाइला इन टर्म्स ऑफ u एंड v so that we can now take the partial derivative of x and y with respect to u and v okay after that we can calculate the Jacobian right so Jacobian रो वैल्यू आसिला माइनस हाफ ओके अच्छा एबे जो वर्टिसेस रो हमको कोऑर्डिनेट देछि चारिटा ओके एटा होछि इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई याको जदि हमें ट्रांसफॉर्म करबा और लिखिबा इन टर्म्स ऑफ यू भी सो देखो जेतबेले एक्स और वाई 0 0 होछि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ओके फर्स्ट वर्टिसेस पई सो यू और v मध्ये 0 0 हबो सो दैट एटा 0 0 हमें लिखि देला सिमिलरली 1 1 हेले यू v रो वैल्यू 2 0 हबो देन 2 0 हेले u v रो वैल्यू 2 2 हबो देन x y 1 minus 1 हेले u v रो वैल्यू 0 and 2 हबो अकॉर्डिंगली हमें याको फिगर रे लिखि देला ओके u और v सो एठी फिगर रो देखो जणा पडुची u को हमें एई पटे नै छु v को एई पटे सो u इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 2 and v is also varying from 0 to 2 okay so that now we can transform this integral okay so हिसाब रे हमें u और v रो लिमिट पुट कर देला आउ एटा होची जैकोबियन रो मैग्नीट्यूड ओके ताहले एबे आउ किछि असुविधा नै यू कैन इजीली कैलकुलेट फाइनली यार वैल्यू 8/3 आसीबो चेक करिवो राइट देन एग्जांपल नंबर 5 एठी एबे गोटे ट्रिपल इंटीग्रल बा वॉल्यूम इंटीग्रल देछि कैलकुलेट करो फॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओके आउ याको बाहर करिवार अछि फर्स्ट ऑक्टेंट रे ऑफ ए स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ओके सो जदि हमें याको कोऑर्डिनेट जदि देखिबा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ताले देखो एटा होची हमें पॉजिटिव ऑक्टेंट नउचु राइट सो ऑक्टेंट मींस 1/8 ओके 1/8 माने 8 भागर गोटे भाग ओके सो एमती 8टा ऑक्टेंट अछि सो ए जो याको हमें जदि ट्रांसफॉर्म करबा इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स सच दैट x इक्वल टू r sin थीटा cos phi y इक्वल टू r sin थीटा sin phi एंड z इक्वल टू r cos थीटा ताले अकॉर्डिंगली जैकोबियन रो यार वैल्यू हमें ऑलरेडी पाइछु गोटे प्रॉब्लम रे करथिला यार वैल्यू आस्थिला r स्क्वायर sin थीटा नाउ द इंपोर्टेंट थिंग इज दैट ए जो ऑक्टेंट रे r रो वेरिएशन 0 to a हबो 0 होची मिनिमम आउ ए जो इक्वेशन देछि स्फीयर रो एठु देखो a स्क्वायर देछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रो वैल्यू व्हिच इज नथिंग बट योर r स्क्वायर सो दैट r रो वैल्यू हमें पॉजिटिव जेतु नउछु सो a नेला देन थीटा रो वेरिएशन 0 to पाई रहइबो इंपोर्टेंट कथा है फाई रो वेरिएशन जदि पूरा ऑक्टेंट दे थांता माने पूरा 8टा भाग जदि हमें बाहर कर थांता ताले फाई रो वेरिएशन 0 to 2 पाई हे थांता किंतु एठी जेतु हमें पॉजिटिव ऑक्टेंट गोटे ऑक्टेंट नउछु हला और फर्स्ट ऑक्टेंट नउछु सो एई जो एंगल फाई ओके यार वेरिएशन केते हबो एति की जो x एक्सिस अछि टू योर y एक्सिस ओके सो 0 to π/2 यार वेरिएशन ही हेई परिबो ताटो आ बेसी हेई परिबो नाही okay accordingly we can set the limit of integration and calculate this value so that finally यार value आसीबा कथा pi a to the power 5/10 okay next example number 6 एठी कहूची find the volume of the ellipsoid okay गोटे ellipsoid रो इक्वेशन एठी दे देला by changing the variables कहूची so हमें एठी इंट्रोड्यूस करिबा न्यू वेरिएबल्स capital x y z such that small x equal to a capital X, small y equal to b capital Y and small z equal to c capital Z. Then we can calculate the partial derivative. देखो del x by del capital X यार वैल्यू a हबो आ बाकी सब partial derivative 0 आसिला ओके अकॉर्डिंगली बाकी जाको भी हमें लिखि देला देयर आफ्टर जैकोबियन हमें बाहर करि परिबा 3x3 determinant which will be your a b c ओके अच्छा आमे कोन करबा ए जो इलिप्सॉइड रो वॉल्यूम जेतु पचारची
this is analogous to 8 times of volume of 1 octant, right? So 8 into, we calculate the volume of 1 octant, positive octant. Okay, so 8 abc होउची हमर जो जैकोबियन टा तार मैग्नीट्यूड आउ एठी एटा वॉल्यूम इंटीग्रल टा रही गला. ओके, दिस इज टेकन फॉर द स्फीयर कैपिटल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, इलिप्सॉइड टा रिड्यूस करिगला स्फीयर को, राइट? नाउ पुणी चेंज करवा एबे वेरिएबल्स को x y z को आम इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट लिखिदेला, राइट? ताले जैकोबियन आम जानिछु यार वैल्यू आस्तिला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रे r स्क्वायर sin थीटा. ओके, आ पॉजिटिव ऑक्टेंट रे जेमती आम प्रीवियस प्रॉब्लम रे देखुथिला r रो वेरिएशन एठी हेबो केते ना 0 to 1. काहे कि बिकॉज एठी देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रो प्लस z स्क्वायर रो वैल्यू 1 अछि. सो फाइनल लिमिट टा एठी 1 हेबो. थीटा 0 to पाई बाय 2, फाइ होची 0 to पाई बाय 2. लिमिट हमें पके देला आउ याकू ट्रांसफॉर्म कर देला. thereafter we can easily calculate this integral. finally यार वैल्यू चेक करिवो आसीबो 4 pi abc by 3, right? the last problem is your example number 7. एठी कोन करछि ना गोटे स्फीयर देछि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. आउ से स्फीयर पई सेंटर ऑफ ग्रेविटी रो कोऑर्डिनेट बाहर करो कहूची इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट, राइट? अच्छा, तापरे डेंसिटी एठी कहूची जे एट एनी पॉइंट इट इज वेरिंग एज x y z product. Okay, so it is proportional to the product x y z. so we can simply write this density function rho to be equal to k x y z, where k is the constant of proportionality. ताले center of gravity रो x coordinate को आमे लिखि परिबा 1 by m into triple integral x rho dx dy dz. एठी m होची rho dx dy dz रो triple integration. it is nothing but the mass of your sphere, right? अच्छा, ताले याकू आमे पुट करिबा ए जो मास रो वैल्यू टाको डिवाइड कर देला, राइट? एठी देखो जो तू हमरो स्फीयर नउचू तारो डेंसिटी टा कांस्टेंट रहे, तेणु तळे ऊपर डेंसिटी एठी कैंसिल हो गला. ओके, सिंपली आमे याकू ए हिसाब रे लिखि देला आउ ए जो कांस्टेंट k अछि एटा भी कैंसिल हो जिवो. ओके, अच्छा, नाउ we change the coordinates into your spherical polar coordinates. x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and z equal to r cos theta. accordingly Jacobian आमे जानिछु यार वैल्यू आसिला r square sin theta. तापरे आमे ए जो ट्रिपल इंटीग्रल अछि ताको एबे ट्रांसफॉर्म कर देला. ओके, now the task becomes easy. we calculate this integration. okay, so x coordinate जो center of gravity रो आसीबो एठी 16b by 35. ओके, ए जगह टिके प्रिंटिंग मिस्टेक थिला बही रे. ओके, मैं एडिट करिछि. सो x coordinate जेमती हमरो आसिला 16b by 35. similarly we can calculate y and z coordinate. एटा भी सेम ही आसीबो 16b by 35. okay, so this is all about your Jacobian. Thank you.